ऑन कर दिया, लाइक कर दिया, अनवेलेबल आ रहा है। अच्छा तो क्या करना है मुझे, एक सेकेंड, फ्रेम से करना है थोड़ा सा नीचे, अभी ठीक है। Hello guys, a very good afternoon. How are you guys? Welcome to Gradeup and welcome to yet another class of YouTube. Today also, like other times, we have come up with a very important topic for you. But before that, I would request you and urge you to upgrade and reinstall the latest app of Gradeup Super that we have for you, so that you can see the fantastic opportunity in the form of this subscription plan that we have got for you. And guys, please don't miss out on that, because today happens to be the last day for that. So please make sure that you happen to subscribe to this plan, at least go through it once. Okay, so let's talk about a very important theme that we have, and in fact a lot of students don't seem to understand this topic only. उनको समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से इस टॉपिक को डील करें, ये क्या सिस्टम्स हैं एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी का, संख्या क्या है, न्याय क्या है, योग क्या है। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगती हैं, और इसलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ये टॉपिक, दैट इज स्कूल्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर from the point of view of the exams. एग्जाम में पूछ सकते हैं in the form of facts, and we would also see that this system would also encompass two very important religions, Jainism and Buddhism. So सब चीज हम डिस्कस करेंगे, don't worry about it. You just need to make sure that you pay attention in the class, and if you have any questions, you are free to question me. Okay, so let's begin with the agenda of today. First of all, let's see overview about the topic for the day. किस कॉन्टेक्स्ट में जो इंडियन एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी डेवलप हुई, वो कैसे हुई। तो एक तो ये है कि व्हाट इज एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी। इट रेफर्स टू सेवरल ट्रेडिशंस, नॉट ओनली वन बट मल्टीपल ट्रेडिशंस ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स दैट ओरिजिनेटेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. When we talk about ancient Indian philosophy, naturally we are talking about all those philosophical strands and sects that originated in the subcontinent in the ancient times. These philosophies arose in India as an inquiry into the mystery of life and existence. Starting से प्राचीन काल से ही जो भारत के लोग थे, जो sages थे and those learned people, they began to contemplate on the mysteries of life and existence. स्टार्टिंग से ही उतने पहले, हजारों साल पहले से ही जो इंडियंस थे वो स्पिरिचुअलिटी में घुस गए थे. वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते थे, वो लाइफ की मिस्ट्रीज के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते थे. और इसलिए शायद जो इंडिया का जो वर्ल्ड में इमेज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन सॉफ्ट पावर का, स्पिरिचुअलिटी से एसोसिएटेड है. लोग जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक स्पिरिचुअलिटी का कंपोनेंट बहुत डोमिनेंट होता है. आजकल 2000 के बाद जब से ये इंडिया में आईटी बूम आया और ये सब चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, उससे शायद मे बी वो इमेज में थोड़ा सा मेकओवर हो. लेकिन इवन नाउ you see, as before, there is this very big dominant section of the people abroad. Whenever they think about India, they think about spirituality, and this is the reason that foreigners come to India to seek peace, to practice spirituality, to learn yoga, to learn ancient Indian philosophies. आप देख लीजिए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, या बाकी और भी कई सारी जगह हैं इंडिया में, साउथ में, कि फॉरेनर्स स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के सर्च में ही आते हैं. दे वांट पीस ऑफ माइंड, they want to move away from the materialistic way of life in the West. So this is what India has to offer to the world. One of the most important ingredients of India's soft power, one of the most important gifts India has given to the world, which is spirituality. और जो हमारा जो foundation है,
जो जड़ है इस चीज की, आप देखिए कितने हजारों साल पुरानी है। ये ऐसा नहीं है कि 200-400-500-1000 साल में ही हो रहा। स्टार्टिंग से 3,500 ईयर्स हो गए इस सब चीज को। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ ग्रेट इनहेरिटेंस वी हैव। और गाइस मैं एक और चीज बताऊंगा आपको यहाँ पे कि कई सारे स्कॉलर्स ऐसा बोलते हैं कि जो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसने डायरेक्टली इस चीज को, इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को बर्थ दिया है। क्योंकि बाकी देशों में आप देखिए उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस वो सुटेबल नहीं है उस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर डेजर्ट है चारों तरफ तो आप कैसे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करोगे वहां पे, कैसे आपके स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे, व्हेन हाउ यू वुड कम टू गेट इनटू द इंक्वायरीज ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ग्रीस में फॉर एग्जाम्पल वहां पे ज्योग्राफिकल जो फिनोमिनन है काफी स्ट्रांग है, वहां पे वोल्केनिज्म है, वहां पे रिवर्स हैं, वहां पे और भी कई तरीके की लाइमस्टोन फॉर्मेशंस वगैरह की हैं। वहां पे जो लोग थे दे पेड मोर इंपॉर्टेंस टू फिजिकल ज्योग्राफी, दे पेड मोर इंपॉर्टेंस टू द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड कल्चर। इंडिया में जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, घने जंगल हुआ करते थे इंडिया में बहुत सारे पशु पक्षी हुआ करते थे। आज की डेट में भी आपको पता है हैं, लेकिन you unfortunately they have been like almost they are on the verge of extinction, many of them in India, and the forest cover in India has also reduced quite a bit. लेकिन एंशियंट टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा घने जंगल हुआ करते थे और इसकी वजह से जो इंडियन जो माइंड्स थे उस टाइम पे उनके दिमाग में एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट नेचुरली उस चीज से मे बी इंड्यूस हुआ हो, ऐसा कहते हैं। जब वो जंगल में यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंसाइट एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। देयर वर रिवर्स in the form of Ganga river, in the form of Indus river, and a person sitting next to the banks of those rivers naturally would be able to have this inquiry into the mystery of life, mystery of the abundance of the God that he has given in the form of all those characteristics of the land in the country. और अगर जंगल नहीं होते तो वो कहाँ स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ वो आर्यन कास्ट को लिखते हैं, या काफी जो इंडिया के जो अगर नदियां नहीं होती, नदिया के जो बैंक्स के बगल में जो सीक्रेट रिवर्स हैं, सरस्वती जो पुराने टाइम में थी, आज की डेट में इट्स नॉट देयर, एंड यू हैव गंगा रिवर। सो रिवर के बैंक्स नहीं होते तो कहाँ पे वो सारे जो वेद और जो पुराण वगैरह लिखे हैं वो कहाँ पे लिखते हैं। सो ज्योग्राफी हैपेंस टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप द spiritual aspect of Indian civilization. I hope this is clear to you so far. In fact, philosophers of no other country delved so deeply into these subjects as Indian did. Indians का हमेशा से ही प्राचीन काल से, as I mentioned, right from Rigvedic times only, with the beginning of the Indo-Aryans, advent of the Indo-Aryans into India, they had started contemplating about all these things. ऐसा नहीं है कि ये जो चीज है ये जब आर्यंस इंडिया में आए, सेटल हो गए, उसके बाद स्टार्ट हुई है। लगभग आते ही जैसे ही वो लोग आए स्टार्टिंग में ही उन्होंने ऋग्वेदा लिख दिया और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे खुद से डेवलप होने लगी। ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसके बाद थोड़ा कुछ आफ्टर कपल ऑफ सेंचुरीज दीज वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड फिलोसफीज दे ऑल्सो बिगिन टू गेट अ कॉन्क्रिटाइज्ड शेप, दे ऑल्सो बिगिन टू come into prominence. Naturally the time period is different, obviously, because we have a lot of such philosophies and they develop with the passage of time. In fact, some of them are quite recent also, relatively speaking, but you see these are this Indian philosophy is basically a reflection of the thinking mind the Indians had. So you see how we can kind of learn from those philosophers and those sages, and in fact this is what we should even be doing to make sure that we are constantly thinking and questioning. Indian philosophy can be divided into 6 orthodox schools and 3 heterodox schools. 6 orthodox schools जिनको आस्तिक बोलते हैं और 3 heterodox schools जिसको नास्तिक बोलते हैं, इसमें डिवाइड किया जाता है। लेकिन guys, I would clarify over here, don't misinterpret astic and nastic in the form of typical the current
parlance that we have for these words. आस्तिक मतलब theist and नास्तिक मतलब atheist. No, it is not so. आस्तिक में आज की डेट में बोलते हैं theist who believes in God, and नास्तिक means atheist who does not believe in God. But no, this is not what we mean when we are talking about Indian philosophy. आस्तिक का मतलब यहाँ पे होता है that, or the orthodox schools that we are talking about here, or the Astika schools, that means those schools that believe in the authority of the Vedas. Now the Vedas will determine where the school is Astik or not. So if those schools that believe in the authority of the Vedas, they would be Astik. Astik if they believe in the authority of the Vedas. If they don't believe in the authority of the Vedas, they would be Nastik. इतनी बात आपको समझ में आया? I hope there is no confusion over this. एक और चीज दोबारा से बोलूंगा यहाँ पे कि जो नास्तिक है, नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि who does not believe in God, because ये जो वेदास का आस्तिक जो स्कूल्स हैं, ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं 6, इसमें से कुछ स्कूल्स ऐसे हैं that don't believe in the existence of God, but still they are considered orthodox or astic schools. Again, I am repeating, some of the schools under this astika strand, like Sankhya or like Vaisheshika, they even they don't believe in the existence of God, but even then they are called as astika schools or orthodox schools. I hope this is clear to you. अगर जहां पे नहीं समझ में आया आप दोबारा से पूछ लीजिएगा. I'd be happy to answer you once again. Let's talk about 6 orthodox schools of Indian philosophy. First of all, what we will be doing, as I said in the previous slide, it can be divided into 2 parts. One is the Astic or the orthodox, and the second is the Nastic or the heterodox schools of ancient Indian philosophy. Let's talk about the orthodox schools, or those schools that believe in the authority of the Vedas. Okay. सबसे पहले हम करेंगे संख्या स्कूल. इसमें इट वॉज फाउंडेड बाय कपिल एक ऋषि मुनि थे पुराने जमाने में, बहुत एंशियंट टाइम में, 6th century BC के आसपास. इनफैक्ट काफी ज्यादा कपिल नाम से दे हैव बीन लॉट ऑफ सेजेस. सिर्फ एक पर्टिकुलर कपिल नाम से कोई सेज नहीं है, बट देयर वाज सपोजिटली दिस sage Kapil that we are talking about, who gave this foundation to this Sankhya school. Sankhya means count karna. It doesn't recognize the existence of God. Sankhya school bolta hai that there is no God, and it also says, more importantly, that the universe is comprised of 2 things. One is Purush, and second is Prakriti. Purush is soul or spirit, and Prakriti is nature or matter. दोनों मिलके पुरुष और जब प्रकृति मिलते हैं, it leads rise to जीव और लिविंग बीइंग, प्राणी. और ये जो संख्या स्कूल ये बोलता है कि पुरुष और प्रकृति ये आपस में इनएक्सट्रीबली इंटरट्वाइंड है. दे आर कंबाइंड विद ईच अदर ड्यू टू इग्नोरेंस and due to desire, and that is why a living being is a combination of Purush and matter, that is soul, and matter, that is the Prakriti that he has. And liberation ya moksha can be got by any living being when this Purush and Prakriti, they can be identified and they can be separated from each other. इनको अगर सेपरेट कर दिया जाए तो लिबरेशन हो जाएगा. दिस इज द सेल्फ नॉलेज जो बोल रहा है दैट इट होल्ड्स दैट इट इज सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन. और वो सेल्फ नॉलेज तब होगा जब पुरुष और प्रकृति
soul and nature, they can be separated from each other, then it will lead to moksha, which happens to be the ultimate aim of all these schools, be it the heterodox schools or the orthodox schools. Moksha, wherein there is cessation from this cycle of rebirth. जो rebirth, the theory of transmigration है कि जो आत्मा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, क्योंकि बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इस जन्म में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सबकी होनी है बॉडी, एंड दिस हैज हैपेंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. आज तक कोई ऐसा नहीं है कि जो कभी अमर हो पाया हो. तो when the body will get destroyed, the soul will migrate to another body and it will get reborn. So this rebirth will keep taking place. The soul will keep on moving from one body to another, and moksha will be got. मोक्ष तब मिलेगा जब वो साइकिल है ना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जो सोल जाती रहती है, आत्मा जाती रहती है, वो साइकिल जब ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाए. दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स. मोक्ष पाना, मोक्ष की प्राप्ति. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस सेल्फ नॉलेज, इट इज नॉट any external or exterior influence or agent that will lead to moksha. self knowledge ही उसके लिए important है, और self knowledge वो तब होगा जो मैंने बताया, it will be separation of prakriti from purush. So this is the first school. The second school of the day is yoga. संख्या के बाद योगा. योगा भी काफी सिमिलर है. देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन संख्या स्कूल एंड योगा स्कूल. योगा इज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द संख्या स्कूल. इट वाज फाउंडेड बाय अ सेज कॉल्ड पतंजलि. पतंजलि सेज का भी एग्जैक्टली डेट पता नहीं है. व्हेन ही वाज बोर्न, सम से इन 4th century BC, some say in 3rd century BC. Otherwise, so there are a lot of speculations around this. We need not get into it, but apparently it was founded by this saint or sage called Patanjali. A person can attain salvation through meditation and physical application through this school. तो ये स्कूल ये बोलता है कि एक तो ध्यान के द्वारा मेडिटेशन जो करते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो यूनियन है, विच इज योगा. योग का मतलब कि क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? दैट इटसेल्फ मीन्स यूनियन. इट सेज दैट ये जो अपना जो मेडिटेशन है और जो फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, दैट इज द ओनली मीन्स ऑफ सैल्वेशन. सैल्वेशन मतलब मोक्ष, जिसके हमने बात किया है. अल्टीमेट एम ऑफ मोस्ट ऑफ द हिंदू फिलोसफीज, एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज, इज द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन और मोक्ष. और मोक्ष तब मिलेगा जब आप राइट मेडिटेशन होगा and we would do right exercises, physical application, and that will lead to control over senses and body. So practice of control over senses and body is central to this system. आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है तो कैसे आपको मोक्ष मिलेगा? दिमाग में एक बहुत एंजाइटी है, फर्मेंट है, काफी सारी चीजें कंट्रोल में नहीं है दिमाग, तो वैसे तो नहीं मिलेगा ना मोक्ष. उसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा. और इसीलिए योगा शायद आजकल पॉपुलर हुआ है. पिछले 50 सालों में आप देखिए कितना ज्यादा क्रेज बढ़ गया है योगा का. वेस्टर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन का उतना नहीं है, वहां पे फिजिकल एक्सरसाइजेस का ज्यादा है, प्रॉब्ली बिकॉज दोज पीपल आर मोर हेल्थ कॉन्शियस. दे रादर देन बीइंग वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. जो स्पिरिचुअलिटी के लिए इंक्लाइन जो वेस्टर्नर्स होते हैं, ज्यादातर इंडिया आ जाते हैं. ऋषिकेश और हरिद्वार में वो आश्रम वगैरह में चले जाते हैं, वो लोग एनरोल कर लेते हैं. बट यू सी दिस इज दैट योगा हैज एज अ दिस थिंग school as a tool of controlling body and mind. It has become very very popular in the last 50 years or so, and this is one of the greatest gift that India could have given to the world. बाकी मटेरियल चीजें हैं, उससे अल्टीमेटली जरूरी नहीं है आप मटेरियल एस्पेक्ट से यू माइट बी हैप्पी, you might be momentarily be happy, but ultimately what yoga is teaching you that you have to make sure that you control your senses. आपके इंद्रियां आपकी कंट्रोल में रहेंगी तो you will ultimately be happy for a much longer duration. That would be sustainable happiness.
and this is central to the system of yoga, that you have to be able to control your senses and also your bodily organs. बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए, बॉडीली ऑर्गन्स में कंट्रोल होना चाहिए और अपने सेंसेस में, दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए. दीज टेक्निक्स हेल्प वन टू अटेन मोक्षा. मोक्ष की प्राप्ति तब ही होगी जब ये सब चीजें करेंगे, और इससे क्या होगा, एज इट वॉज सजेस्टेड बाय द प्रीवियस स्कूल, दैट देयर वुड बी दिस सेपरेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, दोनों का सेपरेशन होगा. जो इग्नोरेंस की वजह से एक दूसरे में मिंगल्ड अप है, वो मेस्ड अप है, वो आइडेंटिफाई क्लियरली आप कर पाओगे, एंड दे वुड बी फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ईच अदर, दैट विल लीड टू मोक्षा. थोड़ा सा यहाँ पे ना फिलोसॉफिकल लगेगा, ये थोड़ा इस तरीके का मेटाफिजिक्स टाइप का इसका जो ओवरऑल हम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज सम सॉर्ट ऑफ मेटाफिजिक्स. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट वहां पे डोंट गेट बॉग डाउन बाय इट, जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स, बट नॉनदलेस यू वुड हैव टू यूज सम फॉर्म ऑफ मेटाफिजिकल वर्ड्स, दैट इज अनडिनाइबल, वो उसको स्किप नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट कम टू अनदर स्कूल विच हैपेंस टू बी द न्याय. अभी हमने पहले संख्या किया, फिर योगा किया, अब आ रहे हैं न्याय में. न्याय मीन्स लॉजिक ओवर हियर. इट वॉज propounded बाय अक्षपाद गौतम. काफी जगह गौतम लिखा रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्याय है तो न्याय मीन्स जस्टिस, और जस्टिस लॉर्ड बुद्धा ने या गौतम बुद्धा ने दिया होगा. नो, it was propounded by Akshapad Gautam, who also happened to be a saint during the early centuries BC, before Christ. It is considered as a system of logic, you see, logic or reasoning ka, so it is like quite a kind of a practical aspect of school. According to it, salvation can be attained through the acquisition of knowledge. ये स्कूल जो बोलता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, जब आप नॉलेज को एक्वायर करेंगे. तो आप देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्कूल, प्रैक्टिकल है, काफी थोड़ा साइंटिफिक एलिमेंट इसमें दिख जाता है, बिकॉज द फोकस हियर इज ऑन लॉजिक, द फोकस हियर इज ऑन द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. और ये स्कूल बोलता है कि दैट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू परसेप्शन. परसेप्शन से आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हो, दैट परसेप्शन इज one of the tools through which knowledge can be acquired. Then inference, infer कैसे करते हो उस चीज को, कैसे इंटरप्रिटेशन होता है किस चीज का. कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड मीन्स शब्द, शब्द साउंड, हियरिंग, that is also called. So these are various ways through which this knowledge can be acquired and ultimately moksha can be attained. So some of the keywords that you need to keep in mind is, one is logic, one is the acquisition of knowledge through perception, inference, comparison, sound, and it was propounded by Akshapad Gautam, not Gautam Buddha. I hope this is clear. Let's move on to the next one, that is Vaisheshika. Before I continue further, guys, I would like to ask if you have any questions. If you have any questions, you can let me know. Next is Vaisheshika, Vaisheshika school. It was propounded by Karnad. Karnad happened to be a sage, again just like other sages. Karna itself means atom, और बोलते हैं कि जो कर्नाद जो सेज थे उनका जो ओरिजिन नाम उल्लू का था, उल्लू का. एंड ही वॉज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली. और जब खेतों में धान की कटाई हो जाती थी, जो राइस के जो ग्रेन्स खेत में जो बच जाते थे, ये जो व्हीट के ग्रेन्स जो बच जाते थे, जो पड़े रहते थे आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको दिस सेज यूज्ड टू पिक अप एंड कलेक्ट, एंड दैट इज हाउ हिज नेम केम टू बी कॉल्ड कर्नाद, ईटर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और एटम्स. Vaisheshika thinkers believe that all objects of the universe are composed of 5 elements.
धरती, जल, वायु, आकाश, and fire is like आग, agni, and ether, that is sky. So it is every object of the universe is an amalgamation, a combination of these 5 things. ये अगर आप लोग माइथोलॉजी थोड़ा प्रोग्राम देखते होंगे, अगर आपने महाभारत वगैरह देखा होगा तो इसमें आपको सुनने को ये मिल जाएगा कि दिस इज व्हाट द एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी इज. ये वैशेषिका का पार्ट है. ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू एटम्स. ये बहुत ज्यादा आप देखिए उस टाइम पे कितना ज्यादा एक बहुत ही स्टार्टलिंग एक जो प्रोपोजिशन है उस टाइम पे, विच इज लाइक फार अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. किस लेवल का ये फोरसाइट है उन ग्रेट सेजेस का कि उन्होंने उस टाइम पे हजारों साल पहले ही बोल दिया. एटॉमिक थियरी एक तरीके से दे दी, जो आज की मॉडर्न साइंटिफिक थियरी है एटॉमिक थियरी, वो तो अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में पता चला, लेकिन उस टाइम पे इंडियन सेजेस ने पहले ही बोल दिया उस हजारों साल पहले कि कोई भी चीज यूनिवर्स में इट इज रिड्यूसिबल टू एटम्स, इट इज डिस्ट्रक्टिबल, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, अणु और परमाणु एज इट इज कॉल्ड. और ये जो परमाणु है या एटम है, दे आर नॉट फर्दर डिविजिबल. और जो भी चीज बनी हुई है, इट इज ऑल मैटर दैट इज देयर इन द यूनिवर्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज वेरियस एटम्स. और वो एटम्स का ही जो कॉम्बिनेशन है दैट लीड्स टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड फिजिकल थिंग्स इन द वर्ल्ड. Ultimately, all the objects, everything in the world, all living beings, they can be reduced to atoms, which are indestructible. और atomic जो theory है, modern atomic theory, there is a overlap between the two, वो भी तो यही कहती है. But unfortunately, इस चीज को ज्यादा जो concept इतना radical और ground breaking जो concept उन्होंने रखा हमारे ऋषि मुनियों ने, उस चीज को ना बहुत आगे नहीं ले जा सके. उस कॉन्सेप्ट को वहीं पे स्टार्टिंग तक ही वो उस चीज में एक लिमिटेड हो गया. उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स ज्यादा आ गया रादर देन हैविंग द साइंटिफिक थॉट. कंटिन्यूएशन ऑफ द साइंटिफिक थॉट जो करना था चाहिए था. दिस साइंटिफिक व्यू वाज लेटर डाइल्यूटेड विद द बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर, बिलीफ इन हेवन एंड हेल. तो वो फिर आगे जो ज्यादातर जो इंडियन जो पिछला जो फिलोसफिकल सिस्टम्स हैं या एज इंडियन रिलीजन ऑल्सो, हर चीज का ना वो थोड़ा डायरेक्शन फिर मेटाफिजिक्स और रिलीजन में आ जाता है. तो थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत थी, विच हैव बीन लाइक वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी फॉर दोज टाइम्स. बट नॉनदलेस इट शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर प्रपोजिंग दिस वेरी वेरी radical thought during those times, and a thing which they predicted thousands of years before, even though did not have any scientific equipments or instruments. I hope this is clear. Next come to Mimamsa. What is here? Next is Mimamsa that we will talk about, propounded by Jamini, one of the sages, means the art of reasoning and interpretation. बट किस चीज की रीजनिंग और किस चीज का इंटरप्रिटेशन? इट इज नॉट साइंटिफिक रीजनिंग एंड साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, इट इज नॉट लॉजिक एज वी डिड बिफोर लाइक न्याय. इट इज रीजनिंग वॉज यूज टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर वैदिक रिचुअल्स. वैदिक जो रिचुअल्स हैं, वेदास में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो सैक्रिफाइसेस वगैरह हैं वेदास के, वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड कल्ट्स, उन चीज का जस्टिफिकेशन देने के लिए, इंटरप्रिटेशन देने के लिए ये जो स्कूल है, it was propounded, and attainment of salvation depended upon their performance. जो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति नॉलेज से नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति किसी और चीज से नहीं होगी. मोक्ष की जो प्राप्ति है that would be on the basis of the performance of those rituals. किस तरीके से आप जो वैदिक रिचुअल्स के परफॉर्मेंस कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो तो आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं कर रहे तो then you would not gain salvation. So you see, it was basically an attempt by the Brahmins to maintain their supremacy in the Vedic system, in the Hindu system, in the Chaturvarna system. और इस वजह से ये इसका जो फोकस है
वो काफी एक ऑर्थोडॉक्स टाइप का हो जाता है. इट इज लाइक अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ फिलॉसफी एज कंपेयर टू अदर्स, टू मेंटेन द dominance supremacy of the priest. Focus is on justification for Vedic rituals. The most important of the schools that has been propounded is Vedanta, and it became very influential from the times of Shankar. Usse pehle it was not very it was just one of the schools, but after Shankar, Adiguru Shankar, he made this very very popular form of philosophy. And in fact, it is said that the current system of form of Hinduism is heavily influenced by this Vedantic philosophy and the Vedantic system. Brahma Sutra of Badaryan forms its basic text. जो बदरयान का who propounded this Brahma Sutra, who came up with this basic text of Brahma Sutra, it was the basis, foundation pillar of this system of Vedanta, that is end of the Vedas. It is also known as Uttar Mimamsa. It is also known as Uttar Mimamsa, and this Mimamsa is also known as Purva Mimamsa. Purva Mimamsa. That is the earlier part of the Vedas, and Vedanta here means the later part of the Vedas or end of the Vedas, which is focused on Upanishads. Because Vedas may be जो as text, they are composed of various subtexts. उसमें संहिता भी हैं, उसमें आरण्यका भी हैं, ब्राह्मणास भी हैं और उपनिषद भी हैं. वो सब चीजें मिलके वैदिक एक टेक्स्ट, वैदिक कॉर्पस बनती है. तो उसमें जो उपनिषद हैं, दे फॉर्म द एंड ऑफ द वेदास, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेदांता. और जो ये जो स्कूल है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद, उपनिषद के अराउंड ये रिवॉल्व करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेदांता, बिकॉज उपनिषद हैपन टू बी द टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस वैदिक कॉर्पस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. टू फेमस commentaries of Shankar and Ramanuj on it. So Shankar की बहुत famous commentary है. He gave propounded the Advait system. Then Ramanuj also commented on it. The theory of karma is linked to this school. तो जो कर्मा, जो हिंदू concept है कर्मा का, ultimately it began to be associated with this Vedanta school, wherein it was said that whatever fate we have today, whatever condition of life we are in today, that was decided by our actions in the previous birth. और जो अगली जो जन्म के हमारे जो भाग्य होगा, जो सिचुएशन होगी, जो लाइफ होगी, that would be determined by our action in this birth. तो जो कर्म का फल जो बोलते हैं कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये थियरी है कर्मा which was linked with this Vedantic system. Any questions that you have so far with regard to the orthodox schools or the ascetic schools? Then we can continue with the heterodox schools of Indian philosophy or the Gnostic schools. Before we go further, I would just like to know from you guys whether if there is confusion. अंकित, ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, ईपीएफओ के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है एंड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. Okay, let's move to the next school that is a part of the heterodox schools. तीन चीफ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स के बारे में बात करेंगे. इनफैक्ट चार हेटेरोडॉक्स स्कूल्स के बारे में बात करेंगे. एक चारवाक है, एक आजीविका है, एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. दे आर कॉल्ड हेटेरोडॉक्स स्कूल्स, नॉट ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स. और हमने बात पहले कर ली कि किस वजह से हेटेरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं. ऑल्सो नोन एज लोकायत. चारवाक इज अ मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. ये ना मटीरियलिस्टिक स्कूल है. मटीरियलिस्टिक स्कूल ये बोलता है कि जो नेचर ऑफ रियलिटी है दैट विल डिपेंड अपॉन मैटर. इफ समथिंग इज
is observable, is felt by senses, then that's a reality. But those entities that are immaterial, जो दिख नहीं सकती, for example spirit है, God है, soul है, ये चीजें दिख सकती हैं क्या? नहीं दिख सकती ना. तो these are called immaterial aspects, and the materialistic school of thought says that only those things that are in the form of matter, that can be observed and felt by senses, they are right, rest can be ignored. It was founded by Brihaspati. Brihaspati happened to be it is said that he was a predecessor of गौतम बुद्धा एंड महावीर. उनसे पहले ही जो बोलते हैं कि जो चारवाक स्कूल जो आया इसमें एंड एज अ स्कूल ऑफ फिलॉसफी इन इंडिया, इट प्री एग्जिस्टेड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. और जो ये चारवाक स्कूल था, इट वॉज वेरी वेरी रेडिकल फॉर दोज टाइम्स because it was purely materialistic. It denied the existence of any supernatural agency. It denied the existence of God. It denied the existence of it denied all the Vedic rituals, जितने भी sacrifices हैं, rituals हैं. It said there is no theory of karma as such. जितने भी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, सब कुछ इसने रिजेक्ट कर दिया. उसने बोला इस चारवाक थियरी ने कि जितनी भी चीजें हम फील कर पा रहे हैं, जो सेंस से हम लोग इन्फर कर पा रहे हैं, दे हैपन टू बी इन रियलिटी रेस्ट ऑफ दीज थिंग्स दैट वी कांट सी एंड कांट बी फेल्ट बाय सेंसेस, दे कैन बी रिजेक्टेड ऑल टुगेदर. एंड दिस इज व्हाई दीज चारवाक्स, द फॉलोअर्स ऑफ चारवाक or Lokayata philosophy, they happen to say that we need to indulge in sensual pleasures as much as possible and we need to minimize pain. क्योंकि sensual pleasures को increase करके ऐसा नहीं है कि हमको कुछ गलत कर रहे हैं, उसको कर्मों का फल आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ चीज होता ही नहीं है. एक ही लाइफ है और रियलिटी वो सब है जो आप देख सकते हो, जो फील कर रहे हो, और इसी जन्म में जीना है और आगे कुछ भी नहीं है. पहले कुछ नहीं था, इससे पहले नो थियरी ऑफ रीबर्थ एटसेट्रा, नो थियरी ऑफ कर्मा. और आप जितना if you can maximize your pleasure, that's good. If you can minimize your pleasure, that pain, that is also agreeable. You should minimize your pain. So this is what it suggested. Accepted the existence of only those things that can be experienced by human senses, which I have already spoken about. Let's move to the next school of the day, that is Ajivika. They were simply a loosely organized group of wandering ascetics. In fact, it is also said that the founder of this sect, Makalli Goshala or Goshala Maskari Putra, as he is also known by, he was a contemporary of Mahavir and Buddha, and he came up with this concept of fatalism, that they were fatalists. They said that everything is preordained. सब कुछ पहले से डिसाइडेड है. आप कुछ भी कर्म करोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छे कर्म कर दिए इस जन्म में तो आगे अच्छे फल मिलेगा या यहाँ पे बुरे. जो होना है वो होके रहेगा. They were like absolute fatalists and they believed in destiny, कि जो किस्मत में लिखा होना है वही होगा, बाकी किसी भी चीज का वैल्यू नहीं है, बाकी कुछ नहीं होता. योर एक्शंस डोंट डिटर्मिन योर फ्यूचर एंड योर प्रीवियस एक्शंस डोंट डिटर्मिन योर प्रेजेंट. इट इज योर फेट. फेट आपकी जो डेस्टिनी है वो डिसाइड करेगी कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके साथ क्या होना है. ये आजीविका प्रोपाउंड करते थे. और आजीविका के लिए जो केव्स जो डोनेट की, आपको पता होना चाहिए कि अशोका and his son, his grandson and his successor, that is King Dashrath, happened to be the patrons of this Ajivika sect. And they, apart from Buddhism, obviously Ashoka, you know, he was a convert to Buddhism, but they were also patronizing this Ajivika, and in fact they donated the caves in Barabar
एंड नागार्जुनी हिल्स में जो केव्स हैं इन बिहार, इन गया डिस्ट्रिक्ट टू बी प्रिसाइज, they donated these caves to the monks of Ajivika sect. Ascetic type में थे, they were also living austere life, they were not living like what was propounded by the Charvakas. Then we have Jainism. Let's see what is Jainism about. In fact, Jainism के आपको already थोड़ा idea होगा ही इस बारे में. Disseminated by Mahavir, the 24th Jain Tirthankara. He was born in a Kshatriya family. His father belonged to the Janatrika tribe. And he became a renouncer. He renounced his household at a very young age, just like Lord Buddha, and he attained Kaivalya, or finally moksha. It is said that Nirvana or liberation is obtained through three jewels. One is right philosophy, right knowledge, and right conduct. These are the three ratnas of Jainism. Three ratnas of Jainism, and you have to remember these. Excuse me. It recognizes the existence of gods but places them lower than Jinnah, or the people who have conquered their mind, their senses. It recognizes the existence of God. Now this is in contrast to the idea of Buddhism, because they denied the existence of God in Buddhism. But here it is recognizing the existence of God, and also it recognizes the Varna system. But it says that we need to transform and change the Varna system. We need to make it like more egalitarian. But it does recognize the Varna system, which was rejected by Buddhism, and it also preached extreme form of asceticism. Bilkul austere life, extreme form of asceticism, that you should not have anything material possession apart from very very basic thing like food. एक आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए. इसके अलावा तो Lord Mahavir ने he also shed his clothes altogether. So this is the kind of extreme asceticism and penance that was preached by Lord Mahavir. और इसमें जो फोकस है, एम्फोसिस है, वो अहिंसा का है. अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है काफी अग्रेसिव वे में लॉर्ड महावीर ने propound किया कि किसी भी तरह की अहिंसा मत कीजिए. और इनफैक्ट ये भी propound किया गया कि जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उस ऑक्यूपेशन को भी मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी अगर आप हल जोत रहे हैं या कुछ खेतों में काम कर रहे हैं तो जो जीव जंतु होते हैं धरती के अंदर, like let's say earthworms and ants etc., they get killed as a result of practicing of agriculture. So that is why most of these followers of Jainism, they took to commerce and trade. And in fact, in the western part of the country, there is still a sizable community of Jains in the country. Is this clear? Next, move to Buddhism, the last heterodox school of the day. Buddhism is it's quite popular. In fact, it became an international religion. It emerged out of India, got wiped out in the country of origin, लेकिन जो बाकी देशों में फैल गया, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में, तो काफी बड़े लेवल पे बुद्धिज्म की फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड में. आज की डेट में भी बुद्धिज्म क्या कहता है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, संसार में दुख ही दुख हैं, और वो दुख जो आते हैं वो डिजायर की वजह से आते हैं. डिजायर को अगर आप कंट्रोल कर लोगे तो आपको लिबरेशन और मोक्ष मिल जाएगा, ये कहता है बुद्धिज्म. और जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने भी, ही वॉज ऑल्सो अ हाउस होल्डर, ही वॉज ऑल्सो क्षत्रिय लाइक महावीर, and he also renounced his family at a young age, and he ultimately attained nirvana by meditating for years altogether. Strongly criticized blind faith in the traditional scripture like the Vedas. It was more aggressive than Jainism. In fact, Jainism तो बाद में it was very difficult to even distinguish it from Hinduism, और आज की डेट में भी you don't find this substantial difference between Jainism and Buddhism, and a lot of Hindus think that Jains are a caste of Hindus. But Buddhism was able to, in the initial phase, was able to clearly distinguish and differentiate itself from the Vedic religion.
It criticized the blind faith on traditional scriptures like Vedas, authority of the Vedas. Ye, by the way, authority of the Vedas was also rejected by Jainism. This is the similarity. But here you see what is the difference. It does not recognize the existence of God and soul. वो recognize करते हैं, Jainism does recognize this in the existence of God and soul, but यहाँ पे it rejects the existence of God and soul, which is very revolutionary for those times, guys. Please try to understand the overall socio-economic, the overall socio-political setup. क्या उस टाइम पे culture setup रहा होगा, क्या उस टाइम पे लोगों की thinking रही होगी. उस टाइम पे ये बोलना that there doesn't exist any God and there doesn't exist any soul, that was quite radical for those times. And it is this radicalism of Buddhism that attracted the laymen to this system, wherein it was preaching equality, no discrimination on the basis of caste, on the basis of gender. It was a very democratic and liberal form of preaching philosophy, and as a result people began to flock to this religion and convert en masse, and there began a vast fan following even in the time of Buddha himself. He attacked the Varna system and the authority of the Vedas, which I've already mentioned. He rejected this. So it became like quite a radical religion, and because of the nature of this religion and the philosophy which is encapsulated in this idea of Buddha, middle path or Madhyam Marga, middle path or Madhyam Marga, which was preached by Buddha. It happens to be like core stone. Buddha ने बोला कि आपको जैनिज्म की तरह बिल्कुल ऑस्टियर प्रैक्टिसेस, अपने को सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, टॉर्चर नहीं करना है. आपको किसी भी चीज को हद तक लेके मत जाओ, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपके दिमागी सेहत के लिए ठीक नहीं है. और किसी भी चीज को लग्जरी, ओवर करप्शन वो भी मत करो, वो भी ठीक नहीं है. इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. मॉडरेशन में कीजिए, एंड दैट इज द मिडिल पाथ. कोई भी चीज है लाइफ में मॉडरेशन में करेंगे, मिडिल पाथ, that is always good. Avoid the extremes, avoid the extreme facets of life, and which is like very, very practical. Extremism in any form, that is bad for the individual and the nation and the society. This was the last school of philosophy of a heterodox school, and we are done with this. Any question, guys, that you have so far, I'd be happy to answer before we end the session. Any questions, guys, that you have? Please let me know very, very quickly. Any questions, guys? And this, I hope it was some substantial takeaway for you, because what we have done is like simplified the complex topic of Indian philosophical system. Because जब भी metaphysics आता है तो ना confusion हो जाता है दिमाग में कि यार ये metaphysics में क्या है, क्या नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप में, वर्ड्स थोड़ा समझ में नहीं आते, बुक्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखी रहती है. सो व्हाट आई हैव अटेम्प्टेड टू सिंप्लीफाई इट, एंड आई डू होप दैट इट हेल्प्ड यू अ बिट. एंड इफ यू आर डन विद इट, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, वी कैन कॉल इट अ डे. एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू remind you that please do go through the app that we have, the offering that we have, the latest subscription plan, and for that you need to upgrade your Gradeup app. So please make sure that you update it, and for those of you who haven't installed it, please do install it. Thank you so much, guys.